முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். India and are enrolled in government schools. Malnutrition, stunting and wasting among children has increased, and India's rank in the global hunger index has fallen to 101 out of 116 countries. The unemployment rates have reached 8.2% for urban and 5.8% of rural workers. WPI inflation is estimated at 12% and CPI inflation at 5.3%. These are hard facts. The hard facts should have been there before the finance minister. After the budget was presented, we asked ourselves, what has the budget done to address any of these grave challenges? The blunt answer is nothing. This budget has done nothing to address any one of the challenges that I've outlined. The government behaves and acts as though it is on the right path and has delivered on the issues that matter to the common people. This is false. This is also bull-headed obduracy. This also reflects the government's contemptuous disregard of the burdens and sufferings of the people. I was astonished, shocked, that the finance minister was outlining a plan for the next 25 years, which he called the Amrit Kal. The government seems to believe that the present does not need any attention, and the people living in the present can be asked to wait patiently until the Amrit Kal dawns. This is nothing but mocking the people of India, especially the poor and the deprived. There was not a word in the speech about any cash assistance to the very poor who have been pushed into extreme poverty and suffered immensely during the last 2 years. Not a word for those who had lost their jobs. Not a word about creating jobs for those whose education stopped at some stage at the school level. Not a word about reviving MSMEs that had shut down. Not a word about distributing more food to combat malnutrition and hunger. Not a word about cutting indirect taxes, especially GST, to contain inflation and bring down the prices of goods. And not a word about giving tax relief to the tax-paying middle class or the tax-bearing head of a household. By any standard, today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. The FM has mastered the jargon of capitalist economics. Read her speech again. Count the number of times she used the words digital, portal, IT-based, paperless, database, ecosystem, global, Atmanirbhar. The word poor occurs only twice in paragraph 6, and we thank the FM for remembering that there are poor people in this country. There are worrying macroeconomic indicators. Top of the list is that the fiscal deficit for 2021-22 has overshot the target of 6.8% and is estimated at 6.9%. For the next year, it will be 6.4%. That is insufficient correction if the goal is to reach 4% 3 years hence by 2025-26. The financing of the fiscal deficit is also a matter of concern. 70% of the FD in 2022-23 will be financed by market borrowing as against 55% in the current year, crowding out private sector borrowing. The worry from the welfare angle is greater. Every key subsidy has been slashed. I repeat it, every key subsidy has been slashed. I'm reading the figures for the current year, 21-22, and the next year, 22-23. Petroleum,
from 6,517 crore to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore to 1,05,000 crore. Food 2,86,219 crore rupees to 2,06,481 crore rupees. The outlay for agriculture and allied activities from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crop insurance from 15,989 crore to 15,500 crore. Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. The total subsidy bill has been cut by a humongous 27%. This is the most unkindest cut in this budget. The finance minister may have forgotten the poor, but the poor have long memories. The next worry is about raising more resources. The FM is betting on heavy market borrowing, an increase in corporate tax by 85,000 crore, personal income tax by another 85,000 crore, and GST by 1,05,000 crore. There is not a word about raising more resources from the rich, especially the very, very rich 142 persons whose wealth in the last 2 years has increased from 23 lakh crore to 53 lakh crore. You will ask me, no doubt, if there is not any aspect of the budget that I welcome. There is a short list of 3. 1, the FM has promised capital expenditure of 7,50,000 crore in 22-23 as against the revised estimate of 6,02,711 crore in 21-22, and I welcome it. 2, the FM has promised an additional borrowing of 1 lakh crore rupees to the states free of interest. I welcome that. The budget speech was mercifully shot at 1 hour and 30 minutes, and I welcome that most heartily. Parliament may vote this budget because the ruling party is a brute majority in the Lok Sabha, but the people will reject this capitalist budget. Thank you, sir. Very, very briefly, आपने पूरा बयान जो आदरणीय चिदम्बरम साहब ने कहा वो पढ़ा और एक विशेष बात उन्होंने कही। ये बजट पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी बजट है और चिदम्बरम साहब ने विशेष तौर से ये बताया कि 7 या 8 महत्वपूर्ण पहलू वो वित्त मंत्री मोदी सरकार दोनों के सामने थे, पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था 2019-20 के स्तर पर आज भी सरकार के मुताबिक है, तो 2 साल खत्म हो गए तरक्की के। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों नौकरियां चली गई, 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गया, 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए, पढ़ने वाले बच्चों का खासतौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में उनका भविष्य अंधकार में चला गया। जिस प्रकार से मैल न्यूट्रिशन में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया, बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई और गांव में 6%, और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है, वो 12% को पार कर गई और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई।
इसलिए इस बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ये इस बजट का सार है। और विशेष तौर से ये बजट और वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उनकी निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। देश के गरीब के प्रति, देश के नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रति, देश के मध्यम वर्ग के प्रति, देश के किसान के प्रति, देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के प्रति और ग्रामीण अंचल में रहने वाले, शहरों में रहने वाले साधारण मजदूर के प्रति। ஏழைகளை நிதியமைச்சர் மறந்துவிட்டார், ஆனால் ஏழைகளுக்கு நினைவாற்றல் அதிகம். இது முதலாளித்துவ பட்ஜெட், புல் ஹெட்டட் என்று சொல்லத்தக்க அளவிற்கானது என்றெல்லாம் சொற்பயன்பாடுகள். இதற்கு முந்தைய ஆண்டு விமர்சனங்களை விட இது மிக காரமான விமர்சனமாக முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரத்தால் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு சில அம்சங்களை வரவேற்றுள்ளார். நிதிநிலை அறிக்கை தாண்டிய ஒரு அம்சம் என்றால் 92 நிமிட உரைக்கு குறைக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு அவர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு முன் 2013 103 நிமிடங்கள் என்ற அளவில் சிதம்பரம் அளித்ததே குறைவான நேர பட்ஜெட்டாக இருந்தது.